Yeah, see, yesterday we have done that two charges Q1 and Q2 separate by a distance r. Okay, if they're charged separated by a distance r, then there is a force of attraction or repulsion that depends on what is their polarity. Okay, if they are both positive, they repel. If they are both negative, they repel. If they are opposite charges, they attract. The force is equal to k q1 q2 by r square. So it is k into q1 into q2 by r square. The value of k is 9 into 10 power 9. Okay, uh, uh, please don't turn off your videos, anyone. Okay, uh, yeah, and the r is a distance between them, and always keep that book open. Okay, the fingertips book open. So I'm going to do questions from there, and q1 q2 are charges. Okay, now today we are going to do some problems based on this. Okay, and so there will be some math involved. Okay, there will be some math involved, and don't get scared because of math. One second, I'll open the uh, go to that book and open the page number. Which page number? One second, can someone remind me which page number was it? That starts at page 199. 199. Thank you. Yeah, 199. So you have to open page number 202. 202, yes. Okay, 202, everyone. 202 में you have to go to question number around 30. Okay, around 30 we will do some questions. अच्छा, ये बताओ सबसे पहले, वेक्टर्स आता है ना सबको कि नहीं आता है? वेक्टर्स, वेक्टर्स में किसको प्रॉब्लम है? सच सच बताता हूँ एकदम ऐसे हाथ खड़ा करके, सर मुझे वेक्टर्स में थोड़ा दिक्कत है। वेक्टर्स में वेक्टर्स में गुड गुड। कौन? एक तो सिया ने हाथ उठाया, और दूसरा कौन है? दूसरी भावना। ओके I may have forgotten, but like I can do it. ओके, ठीक है। सात्विक, ठीक है, गुड गुड। एटलीस्ट वी हैव पीपल हु स्पीक अप। Under vectors, Pardon? which topic under vectors? Like Simple addition of two vectors. If I give you two vectors like this, ऐसे, and I ask you to find the resultant of those two vectors. Resultant of two vectors निकालना अगर नहीं आता है तो पहले हम वो सीखते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। 1 minute। See this, can you see my screen? Yeah, okay. First we'll try to understand it in our head, imagination mein, how things go about. So suppose you are, what is this? Okay, suppose you have a vector which is u, and there is a vector, so these are two purple vectors. Okay, and their resultant is their sum, u plus v. Resultant is u plus v. We'll try to understand what is how is the sum. Okay, this notation might be new to you. This means, see, if I write, one second, if I make it, say suppose u, think of only u. Okay,
think of u is, so this is origin, this point is origin, and then u is 3 units to the right. दिख रहा है, u is 3 units to the right. क्या है ये, what is this, 5.73? Oh, that means in this graph, one, see, you see this, one unit is actually 2. Okay, it is actually 2. ठीक, that's why when you are going 3, it is showing somewhat 6 ऐसा. ठीक है, approximately 6. So I'll make it, so approximately, now see 6, u is 6 comma 0 means ऐसा है, मतलब 6 I cap plus 0 j cap. इसमें जब you write these vectors like this, ऊपर वाला I होता है, नीचे वाला j होता है, ऐसा होता है. और now you can see why v is 0 I cap and 6 j cap. Do you understand this, everyone? Hello, ij तो पता है ना सबको कि नहीं? Um, Yes, I is sir. x axis, j is y axis. Okay, ये समझ में आ गया. u is 6i plus 0j, and v is, please write this in your notebook, please write this in your notebook. And v is, ऐसे मत लिखना ब्रैकेट में, you write in normal 6i plus 0j, and v is 0i plus 6j. Okay, and when you add these two vectors, you get 6i, resultant red vector is 6i plus 6j. Wait, sir, ये लाइक ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर 6 नीचे 0, इस नोटेशन को क्या कहते हैं? इसका मुझे नाम तो नहीं पता, इसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट नोटेशन, आई डोंट नो. Like, is this commonly used? इट इज कॉमनली यूज्ड इन मैथ्स. मैथ्स में वेक्टर्स ऐसे लिखते हैं, फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखते. so my current one for 2 minutes. Can you repeat what you said in last 2 minutes? Oh, we have said that this vector is 6i plus 0j. This vector is 0i plus 6j, and when you add these two vectors, you get 6i plus 6j red vector. Okay, is was this Sia? Yeah. Okay, so now see, try to understand. अभी तुमको समझना है कि we will not go in the numbers much. Okay, you try to understand कि when I change one of them, how is the resultant? Okay, how is the resultant? By the way, resultant is something which, if you complete the parallelogram of the two purple vectors, if you complete the parallelogram like this, then the diagonal of the parallelogram. Okay, okay. Or you can also think of the resultant like this. Vectors you can always shift parallelly. You can always shift vectors parallelly. So if you shift this vector, I can't, so I'll make another and then shift. See, if this was the vector of purple vector, oh sorry, pink, yeah, purple vector, and then what I do is I put it in, yeah, like this. Okay. So I have kept the two vectors now end to end. The from this final initial starting to the final end, this is the resultant. Fine. Um, Now see how the resultant changes when you change u. If you increase u, suppose if I make u instead of 6, I make it 8. What do you think will happen? Think, थोड़ा सोचो और फिर देखना जो मैं करूंगा वही होता है कि नहीं. If it goes against your thinking, please tell me, सर मैंने ऐसा सोचा था पर this does not happen, ऐसा हुआ. ठीक है, सोच लो क्या होगा. If I make this u longer to the right, what is going to happen? What should happen? ठीक है, सोच लो अपने मन से. ठीक, फिर मैं अभी देखो करूंगा. थॉट सोच लिया, अब देखो मैं करने वाला हूँ. अरे कैसे कैसे बढ़ाऊँ इसको. हाँ बढ़ गया. हाँ, did the same thing happen what you thought, or something unexpected happened? I'll repeat. ऐसे था ये, ऐसे था 6 पे, मैंने इसको 8 पे कर दिया. I have only changed u. Resultant क्या हुआ? आगे समझ में? Fine. Now these are two perpendiculars. Let me change the angle. एक को इसको करता हूँ. अच्छा इसको भी देख लो, इसको भी 8 कैसे क्या होगा, 8 को 8 कर रहा तो ऐसा हो गया. ठीक है, fine, it's fine. What happens if I do it like this? See,
See ऐसे it goes ऐसा, right, ऐसा ऐसा, ठीक ठीक. Try to understand all this, okay, क्या हो रहा है. It is as if you have to understand this resultant. You think of it like this. You are a person who's standing here, okay, ठीक है, and two of your friends are pulling you. They're pulling you. This is friend F1 and this is friend F2. They are pulling you. The direction in which they are pulling you is given by this purple arrow, and the amount with which they are pulling is also given by the length of these arrows. Amount, like how much are they pulling, with what force, and this then the resultant is actually the force in which you will be actually pulled, right? Resultant force. Okay, suppose if the friend 2 is pulling you with a strong lesser force, right? See, suppose this is friend 2. If friend 2 was pulling you with an equal force of friend 1, which is both are 8, you are approximately going in the middle direction. Can you see? दोनों के 45 degree पे. But if the friend 2 is weak, then you are more inclined to go towards the friend 1's direction. Do you understand this? You are not going like this now. Guys, understood? नहीं आ रहा समझ में? Can you repeat it once more? See, this one of the purple arrows. You are standing here. You are the person. You are here. Okay, they here, and one of your friend is here, F1, and one of your friend is here, F2. Okay, so the resultant is, so if these friends are pulling you, F1 is pulling you, and F2 is also pulling you. So F1 is pulling towards themselves, and F2 is also pulling themselves. You okay? Now the the red vector is the resultant, is the direction in which you are actually pulled. The resultant of it's called the resultant. It is the direction in which you are effectively pulled. So if the friend one is weaker, is weaker, then you are friend two is weaker. This is friend two. Okay, this is friend one. If friend two is weaker, you are inclined to go in the friends one directions, right? Understood? uh, सात्विक अभी बताना, फ्रेंड टू स्ट्रॉन्गर है कि फ्रेंड वन स्ट्रॉन्गर है? So 2 is in the x-axis, right? नहीं नहीं नहीं, टू टू वन, ये वन है और ये टू है. Yeah, 1 is stronger. 2 is stronger. हाँ, टू स्ट्रॉन्गर. अच्छा ये बताना थोड़ा सा कि ये एंगल जो है 45 से कम होगा कि 45 से ज्यादा होगा? सात्विक, Calm. कम होगा. वेरी गुड. एज एवरीवन अंडरस्टूड ये वाई इट विल बी लेस देन 45? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? हेलो. Got it, sir. Yes, sir. अब ये एंगल कितना होगा ये निकालने के लिए कैसे करते हैं? देखो ये एंगल कितना होगा, ये रिजल्टेंट कितना होगा, देखो कैसे करते हैं. बहुत सिंपल है. तुमने को वो याद है ना? देखो, I'll do this derivation, okay? Now we'll come to the mathematical part of it कि मैथ से कैसे निकालते हैं. How is, so this was easy, like perpendicular or parallel, then it's easy. What if there is an angle between them? See, resultant of two vectors, how do you do that? If there is vector A and there is a vector B and they're at an angle theta, right? Okay, what you do is, I'll do a quick derivation of the concept. The quick derivation is, yeah, I'll try to complete the parallelogram and the resultant will be like this. Okay, then what we do is, uh, always try to break one of the vectors. So b, whichever is not inclined, whichever is inclined to the axis, like this one is inclined, right? So isko break karte hain. How do we break it? We break it once in, so if if b is a vector which is an angle theta, then of course you can break it like in two directions. One is, sorry, one is like this, which is b cos theta, and one is like this, which is b sin theta. If you don't understand, please, you don't understand why is it is b cos theta and why b sin theta, please raise hand. Okay. And then what you do is, you write this b vector as sum of two vectors. So
one is b cos theta, and then another is b sin theta, and then of course I had a तो पहले से ही था, so instead of two vectors now you have three, क्योंकि you have broken b into two. Okay, a पहले से ही था, ठीक है. Now see, these two vectors are in the same line, same direction, so you can just add them up. It will be a plus b cos theta, right? One, and this vector is perpendicular to them, so it is like b sin theta, okay, right? So therefore the resultant of these two will be, if these are perpendicular, the resultant, the magnitude is under root of a square plus b square, matlab this square plus under root of this that square, right? So if you do r square, r is equal to under root of स्क्वायर ऑफ इसका प्लस स्क्वायर ऑफ इसका, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर. और ये देखो, दिस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर विल गिव यू बी स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर, इफ यू टेक बी स्क्वायर कॉमन देन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. So you have this formula which is a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, this is r. दिस फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, ठीक है. मोस्टली योर विजुअलाइजेशन विल बी यूज्ड. ओके, मोस्टली योर विजुअलाइजेशन विल बी यूज्ड. तो हाउ टू डेवलप योर विजुअलाइजेशन आई एम टेलिंग यू. ओके, वो कैसे करना है, ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए बट यूज नहीं होने वाला ज्यादा, ठीक है. देखो, लिसन, write these questions. Okay, I have two vectors. One vector has a magnitude of suppose 5, right? One matrix has a factor of 5 and both of them are inclined at theta. Okay, a भी 5 है. अब ये tell me what is the resultant of these two vectors and where it is. What is the resultant of these two vectors and where is it? You have to break them. Okay, break them. Just then it will be easy. इसको break करोगे, किस direction में break होगा ये? It will be broken into two direction. One is like this and one is like this, right? Yes everyone. देखो, ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे अगर वेक्टर इज लाइक दिस, नो, वेक्टर इज लाइक दिस, तो वो एक ऐसा ब्रेक होता है, एक ऐसा ब्रेक होता है, ठीक है. अगर वेक्टर इज लाइक दिस तो वो ऐसा ब्रेक होता है और ऐसा ब्रेक होता है, ठीक है. अब सपोज वेक्टर इज लाइक दिस और एंगल ये थीटा है, तो उसके दो ब्रेक होते हैं. सपोज ये 5 है तो ऐसे ब्रेक होता है. इस जो थीटा के साथ जो लगा हुआ होता है वो 5 cos थीटा हो जाता है, और जो थीटा से नहीं लगा हुआ होता है वो 5 sin थीटा हो जाता है. अंडरस्टूड? फिर से बोल रहा हूँ, vector, when you break, the vector which is adjacent to theta becomes 5 cos theta and the vector which is not adjacent to theta becomes 5 sin theta. Okay, and it is your common sense which tells you that if the vector is blue it will be broken in like this and this direction and this direction. Okay, this common sense will tell you. Fine. So if you break this 5 vector, right, into 2, in which direction x positive, you can tell me किन दो डायरेक्शन में ये ब्रेक होगा आदि? So it'll be the same thing, 5 cos theta 5 sin theta. But in which two directions? Up and right, towards the right. मैंने तुम्हारे नाम दे दिया है बेटा, देखो नाम दे X दिया positive, तुम्हारे. Y positive. Yeah, x positive, sorry. पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y ना. पॉजिटिव x में कितना होगा? 5 cos theta. हाँ, 5 cos थीटा. तो रेड वाले के दो बना रहा हूँ, ये ब्लू वाले 5 sin थीटा, ठीक है. और जो नीचे वाला रेड है उसके कैसे ब्रेक होगा आदि? Again, x positive and y negative. वेरी गुड. x पॉजिटिव में कितना? X positive again 5 cos theta. हाँ, 5 cos थीटा. और y नेगेटिव में 5 sin theta. हाँ. अब देखो, ये चार वेक्टर के साथ खेलना है, 1 2 3 4. इसमें देखो ये दोनों उल्टे हैं और इक्वल हैं, ऑपोजिट भी है और इक्वल भी है ना. जैकपॉट, कैंसिल कर दो, हटा दो. ठीक, अंडरस्टूड? ये समझ में आया कैंसिल क्यों किया कि नहीं, ये समझ में आया? बोलो, आ गया एवरीवन? ठीक. और इन दोनों का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? सिंपल ऐड.
सिंपल ऐड, राइट? तो इनका आंसर क्या आएगा? 10 cos थीटा। समझ में आ गया कि नहीं? एवरीवन? ठीक है, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। 630, don't tell me in decimals, okay? Tell me the answer in whatever irrational numbers you get, root 2, root 3, okay? Don't tell me in decimals. एंड इसको चलो करते हैं 8, और इसको हम कर लेते हैं 8 नहीं करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 6 पहले तो 6 नहीं, ये तो इजी है ना, 8 कर लेते हैं, चलो 8 और 30, 8 का, हाँ ठीक। अब आंसर बताओ, व्हाट इज द फाइनल आंसर? दिस इज x, दिस इज y। Is it 7 root 3? क्या ये कंप्लीट आंसर है? अच्छा एक चीज है, मैंने यहाँ पे गलत आंसर बोला है, ये वेक्टर है ना, तो इसको ऐसे मुझे बोलना है 10 cos थीटा आई कैप, ये बोलना चाहिए, ठीक है? डायरेक्शन के साथ होना चाहिए वेक्टर। So 7 root 3 I cap. क्या कुछ जे कैप नहीं है? No. पक्का? Yeah. सोच लो। Yeah, sir, there's no J अरे ये cap. 6 है और ये 8 है, होगा ना जे कैप? तो होगा नहीं होगा? देखो Yeah, 6 को I'll be ब्रेक, there. I'll be there. 6 Yeah. को बताओ मुझे, 6 को ब्रेक करना कैसे ब्रेक करेंगे? बोलते रहो अनन्या। So x positive में 6 sin theta and ए ए ए ए ए एक्स पॉजिटिव में बोला, थीटा के साथ लगा हुआ एंगल 6 कितना cos होता है? theta. Yeah, 6 cos theta. 6 cos cos Theta cos or cos here 30. Cos 30. 30, हाँ And in y will be 6 sin 30. हाँ सही है, प्लस वाई बोलो। Plus 8 cos 30 किस डायरेक्शन में? x positive. ठीक है, वेरी गुड, 8 cos 30 और And then y negative में 8 sin 30. वेरी गुड। अब बताओ 8 sin 30 कितना होता है? ये वैल्यूज बता दो सबकी। 6 cos 30 is 3 root 3. हाँ 6 root 3 by 2 which is 3 root 3, very good। And 6 sin 30 will be 3. very good। And then 8 sin 30 will be 4 root 3. 8 sin 30 is 4, 4, yeah, just 4, yeah. And 8 cos 30 will be 4 root 3. yes this is 4 root 3, 8 into root 3 by 2 which is 4 root 3। Yeah, तो ये वाले जो दोनों हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 3 root 3 plus 4 root 3 7 root 3 आई कैप, ठीक है? yeah. लेकिन ये वाले हैं, ये 3 है और एक नीचे 4 है, ऊपर 3 है नीचे 4 है, ज्यादा कौन सा है? नीचे वाला है ना, दैट विल डोमिनेट। कैंसिल कर देगा, 3 minus 4 1 हो जाएगा, 1 नीचे की तरफ 1, राइट? इन Yeah. दोनों का सी, प्लीज सी एवरीवन, इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस 6 sin 30 and the 8 sin 30 will just be a 1 downwards। if you don't understand please ask, if you don't understand why इन दोनों का has become 1 downwards please ask। So it becomes negative j cap, right? yeah, so -1 j cap, नीचे की तरफ 1 है तो j cap में लिख देना -1 j cap, okay? 7 root 3 -1 j cap, okay everyone? अब now if you want to find the resultant, कैसे देखो रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं? 7 root 3 किस पे चलना है? आई कैप पे चलना है, 7 root 3 चल गए, 7 root 3, और जे कैप में कितना चलना है? -1, राइट? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, राइट? दिस इज द एंगल थीटा, ठीक? एंड देन दिस लेंथ इज 1, डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? अच्छा एक बात बताना, tan थीटा कितना होगा सीरी? Sin theta by cos. In this one, it'll be 1 by 7 root 3. यस, प्लीज एवरीवन गूगल
गूगल करो इसको कि थीटा इज, इसको लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/7√3. Okay, in your computers you can google, it is called arctan of 1/7√3. Please go to online any calculator or just google arctan 1/7√3. वहां पे डालो, कितना आंसर आ रहा है वो बताओ, जल्दी जल्दी करो. ARCTAN and then put 1/7√3. If you can't put 1/7√3, find separately what is 1/7√3 and then put the decimal value in here. तो मुझे आंसर चाहिए. Yes, waiting. नहीं मिला क्या tan कितना है ये एंगल? क्या और क्या प्रॉब्लम? अनुश्री, व्हाट्स प्रॉब्लम आर यू फेसिंग? I don't know, I'm not able to do it properly. गूगल पर ओके. So I got 2.4749 rad. रेडियन. Yeah. कैन यू 2 पॉइंट तो बहुत ज्यादा आ रहा है. 2 रेडियन नहीं होता. I got 0.23 rad. 0.23 रेडियन सही है. उसको उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर आंसर बोलो. ऑनलाइन ही कर लो, तुमको कौन हाथ से करने को बोल रहा है? Sir, I got 4.715 degrees. 4.7 डिग्री ना. तुम खुद सोचो. देखो देखो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते हैं कितना आंसर होगा. ये 1 है और ये 7√3 है. 7√3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? √3 होता है 1.73. √3 1.73 होता है ना. तो ये 14 से कम है कि नहीं? 14 से कम है ना, क्योंकि 7 2 14, राइट. ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 11 होगा शायद, 11 हो अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ठीक है. तुम निकाल लेना, बता दो कितना है 7√3. 12.124. 12. ठीक है, 12 है. चलो 12 है. तो अब ऐसे सोचो, थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कि जब तुम 1 ऐसे जाते हो और 1 नीचे जाते हो तो ये एंगल कितना होता है? तब ये एंगल कितना होता है? थीटा. 5 ये कितना होता है? 45 degree. 45. अगर तुम 2 ऐसे जाओगे और 1 ऐसे जाओगे तो ये 45 से कम हो जाएगा, राइट? है ना, समझ में आ रहा है? वैसे अगर तुम 12 जाओगे, कितना 12 जाओगे और 1 ऐसे जाओगे तो ये एंगल कम होगा, ऐसे 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसा होगा ना, 5 डिग्रीज में. समझ में आ रहा है? एवरीवन गेटिंग इट? तो उसने पहले बोला था 2 रेडियंस. 2 रेडियंस तो नहीं है. 2 रेडियंस इसलिए नहीं है क्योंकि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली पाई रेडियन. हाँ, 5 बाई पाई रेडियंस 90 डिग्री, तो 3 रेडियंस इज 90 डिग्री. पाई रेडियंस अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, तो पाई होता है 3.14. तो 3.14 अगर 90 डिग्री है तो 2 रेडियन तो बहुत ज्यादा है ना, मतलब कितना 56 या ऐसे कुछ होगा, 50-60 होगा. ठीक है, अंडरस्टूड? एम आई गोइंग टू फास्ट? नहीं, ठीक. Sir, pi 180 degrees होता है. ओ आई एम सो सॉरी. पाई 180 डिग्री तो ये और ज्यादा है. पाई 180 डिग्री है तो समझ लो 2 रेडियन तो 90 डिग्री से भी ज्यादा है, मोर देन 90 है ना, राइट? तो इसलिए मैंने आउटराइट बोल दिया 2 रेडियन नहीं आंसर करें. इनको तो कुछ गलत किया उसने, या मतलब गूगल गलत किया है. तो ये आंसर कितना तुमने 4 डिग्री बोला ना? 4 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग दिस, हाउ टू गेट एन आइडिया ऑफ द एंगल? ठीक है, okay, actually nothing will be like this asked ki arc tan of 1/7√3. Okay, you are not expected to know this. Okay, you're not a human calculator. Okay, but if I ask you what is arc tan of 1, you should know. Tan inverse of 1 कितना है?
इधर देखो, tan अगर यह tan थीटा 1 है तो थीटा कितना है? 45. ये 45, ये पता, ये समझ में आया ना, राइट? ठीक ठीक, ओके। तो ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो, वो वो बुक खोल लो, वही वाली, ठीक है? उस बुक में वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, हाँ, 30, ओके, 30, ठीक है। Consider the charges Q, Q, and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle of each of side L. The sum of forces acting on each charge is, देखो, so there is an equilateral triangle, ठीक है, and each side length is L, and they're asking, there is a, suppose उसने बताया नहीं कौन से, तो assume करते Q, Q और minus Q, ठीक है। Let us try to find the force. I'm calling this 1, this is 2, this is 3, okay? I'll try to find the force on 2, F on 2, ठीक है? F on 2. 2 पे who is providing force? So I think Sia will talk to me. Sia, 2 पे who is supplying force? Who is applying force? 1 and 3. 1 and 3. 1 is in which direction? Opposite direction. Like this? Yes, no? Yes, like this. And 3 in which direction? Towards minus Q. Towards 3, no? Hmm. Like this, okay? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? या ठीक, अच्छा। अब तुमको समझ में भी आ गया होगा कि अगर मैं इनका रिजल्टेंट, इफ आई गो टू फाइंड द रिजल्टेंट, इट विल बी समवेयर लाइक दिस, नो? यस और नो? राइट, ठीक है, विल फाइंड इट। फर्स्ट you tell me, Sia, what is the length of this orange vector? Force. तो कौन सा वेक्टर? ये वाला ऑरेंज। It'll be K वेरी गुड। Q square Q स्क्वायर by L square. बाय एल स्क्वायर, वेरी गुड। और ग्रीन वाले का? K Q square by L square. बाय एल स्क्वायर। अच्छा, एक डाउट ये है कि सर, आप बोलते हो कि Q1 Q2 जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पे तो Q1 टू Q है, तो Q स्क्वायर हो गया, राइट? बट यहाँ पे इट शेड इन वाले में, इसमें Q और माइनस Q है, तो माइनस Q स्क्वायर होना चाहिए ना, मतलब ये माइनस होना चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता, ऐसा इसलिए वी डोंट राइट इट लाइक दिस, बिकॉज already you have applied your brain, you have thought about the direction of this vector, right? Sorry, you have thought about the direction of this vector, right? If you have thought about the direction of this vector already, you have applied your brain and you have said, understood that they are opposite charges, so force on 2 will be towards 3, इतना सोच लिया ना, फिर सिर्फ then you have to only write magnitude, okay? Okay, fine. So you will write only plus k, okay? So this is my force 1, this is my force 2, and do you see that सर their बस magnitude? Yeah. सवाल है, जो हाँ, ये माइनस क्यू प्लस क्यू दैट्स ओनली कन्वेंशन, राइट? तो राइटिंग माइनस इन द मतलब लाइक जो चार्ज लिया है माइनस एंड प्लस, इट जस्ट डिनोट्स की ऑपोजिट है टू ईच हाँ, अदर, दैट्स ऑल, राइट? सो इट्स जस्ट या लाइक अ या कन्वेंशन। तो फोर्स में माइनस लगाने से इट वोंट मेक एनी सेंस। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। फोर्स देखो, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है? चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है ब्रो? टेल मी, तुमको क्या लगता है, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है? आई फील लाइक इट्स स्केलर। हाँ, स्केलर ही है। कभी ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि 5 कूलम टुवर्ड्स ईस्ट, बस 5 कूलम बोलते हैं ना, या तो स्केलर है। स्केलर क्वांटिटीज में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि +5 kg -5 में तो नहीं होता, प्लस मीटर में जैसे +5 नहीं, मीटर तो फिर वेक्टर हो गया ना,
राइट? स्केलर में जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो डायरेक्शन नहीं बताता, राइट? बट जब वेक्टर में प्लस माइनस होता है तो वो डायरेक्शन बताता है। ओके, ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। तुम्हारे बुक में एक जगह होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कूलम्स लॉ, एक बुक में होगा तो एनसीईआरटी में वेक्टर हाँ, फॉर्म। F Q1 Q2 by R cube in the direction of R vector. हाँ, वो मैं तुमको बताऊंगा, तब तुमको यू विल अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स में जब प्लस माइनस लगता है तो वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो एफ एक वेक्टर है। एफ, ये दोनों येलो और ब्लू, येलो और ग्रीन जो इसमें वेक्टर्स हैं, इसमें इफ यू मे टेक प्लस और नेगेटिव इट इट गिव्स यू डायरेक्शन। ओके, तो दैट्स वाई अगर इफ, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है? तुमको वेक्टर इक्वेशन में समझ में आएगा, ठीक है? वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सी, इक्विलेटरल है तो ये 60 है, राइट? ये एंगल कितना है? 120, राइट? So if you see these two vectors have equal magnitudes and the angle between them is 120. So what is the resultant of these two vectors? पहली बात तो रिजल्टेंट ऐसे होगा, राइट? सबको पता है। और अच्छा ही बता दो, कॉमन सेंस, अगर रिजल्टेंट ऐसे है तो इसका एंगल कितना होगा इसके साथ, इसके साथ? 60 होगा ना, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो ये बीच में भी तुम इक्वली खींचोगे ना 60 से, ये भी 60 होगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे कर, दो तरीके हैं करने के। पहला फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज कितना, 120, राइट? यहाँ पे 120 होगा। अच्छा, दो ए और बी की वैल्यू सेम है, राइट? यहाँ पे ए की वैल्यू ये ए है और ये बी है। मैं अंदर नहीं, आई विल नॉट पुट इट इनसाइड। सो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 120 इज एक्चुअली माइनस हाफ, ठीक है? when you put this minus half, ये 2 गया, you will just get a square plus square root r. So r is a. Okay, you will get the resultant is actually equal to just one of the vectors. It is k. A vector was k q square by l square. Understood? Yeah. Hmm? k q square by l square. Now बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं ना। इसका आंसर कितना होना चाहिए? किसी ने पूछा था कल मेरे से। 0. 0 होना चाहिए। मैंने सम ऑफ इस पे निकाला है फोर्स ना, बस इस पे ऑन 2 निकाला है, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर 0 इसलिए क्योंकि इस पे भी निकालोगे, इस पे भी निकालोगे तो सम विल बी 0। ओके, मैं इसको और अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने तुमको ये बता दिया कि किसी एक पे कैसे निकालते हैं, ठीक है? फाइन। अच्छा, एक और बताओ। सपोज इसी क्वेश्चन में q q and minus q, see if I had found force on this, ठीक है? My one force would be like this, another force would be like this, right? Yes or no? And both will be f, where I am side में लिख देता हूँ, f is k q square by l square, right? Don't bring it in the main equation because, you know, and this angle is 60, right? Now the resultant will go like this, right? And the resultant will be under root of again f square plus 2f square cos 60. Do you get it, everyone? Cos 60 is half. ये half गया, you will get 3f square का square root, so it is root 3f. Okay, ये root 3f है. Fine, everyone. Such questions will come up. Okay, ठीक है? अब आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, वो करो। सर ऊपर भी √3 है होगा, राइट? इस पे √3 नहीं होगा ना, इस पे देखो ये माइनस हाफ था ना, माइनस हाफ। तो जब ये माइनस हाफ था तो ये इसने क्या किया, हाफ हाफ गया और माइनस ए स्क्वायर बन गया ना, तो ए सी स्क्वायर ने इसको काट दिया। हाँ सर, तुम खुद ही सोचो, देखो इसको थोड़ा सा विजुअली सोचो। दो फोर्स हैं, इसको ऐसे बताओ मुझे। चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। ये एफ है और दूसरा वाला भी एफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अभी रिजल्टेंट कितना है सात्विक? तो सम सात्विक, अभी दोनों एफ आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द रिजल्टेंट?
Satvik dude. Yeah. Both F are in the same direction. What is the resultant? So 0. And it's same direction, same direction. One, two, both of your friends are pulling you in the same direction. Will you not? You are saying zero. Zero means you will not move anywhere. Will it happen? ऐसा होता है क्या? No, you will move in the direction of F. Yeah, the resultant is 2F now. Okay. Yeah, fine. ठीक, अगर F ऐसा है और F ऐसा है, अब रिजल्टेंट क्या है? अब 0 होगा. 0 होगा. यस. अच्छा, जब F ऐसा है और जब F ऐसा 90 डिग्री पे, तब रिजल्टेंट कितना होता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस. The angle is 90, no? Yeah. So you'll use that f square plus f square plus 2 f cos 90. What is cos 90? Cos 90 is 0. ठीक है. cos 90 is 0. ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म गया. आंसर है √2f. √2f is 1.414f. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. फाइन. Because, तो अगर अब देखो, अब खुद सोचो, अगर ये 60 होगा, देखो जब ये 60 एंगल था ना, इस केस में देखो, ये वाले केस में 60 था, तो √3f आया. मतलब अगर ये f है और एक f है और एंगल 60 है, तो एंगल आंसर है √3f, विच इज 1.73. ये 1.4 से ज्यादा है, 1.73, और ऑफ कोर्स 2f से कम है. 1.73 2f से कम है, 2 से कम है. राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? होना भी चाहिए ना, मतलब ये 60 है. राइट? राइट है ना? भावना, अगर मैं इसको 70 कर दूंगा, इस एंगल को 70 कर दूंगा, ठीक है, तो ये आंसर कैसे चेंज होगा? 1.73 कैसे चेंज होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? It'll be lesser. यस, इट विल बी लेसर. वेरी गुड. किसके बीच में वाली होगी? कहाँ, कितने, किसके बीच में होगी? कहाँ कहाँ अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है तुमको? कितनी कम होगी? क्या 1.4 हो जाएगी? Yeah, I guess. नहीं, 1.4 तो 90 डिग्री पे होती है ना. Oh, it'll be more than 1.4, less than 1.4, 1.3. 1 हाँ, वेरी गुड. इट विल बी मोर देन 1.4 बट लेस देन 1.73. राइट? अच्छा, एक बात बताना, 90 से अगर मैं ज्यादा कर दूं, 90 ज्यादा कर दूं, 100 कर दूं, तो आंसर क्या होगा? For which one? अरे, फॉर द रिजल्टेंट फोर्स. अगर मैं ऐसे एक एफ It'll ऐसा be more 100 है, than 1.4. मोर नहीं होगा ना. No, less than 1.4. और हाँ. अच्छा, अभी अभी देखा कि जब 120 होता है, जब 120 होता है ना, तो सेम आ जाता है, आर इज ए. राइट? मतलब जब 120 डिग्री है एफ, और ये एफ 120 डिग्री है, तब आंसर एफ ही आ रहा है. 1f, दैट मीन्स 1f. राइट? समझ में आया ना एवरीवन? तो अच्छा, फिर बताओ कि अप्रोक्सीमेटली 100 पे कितना होगा? 100 पे कितना होगा, कितना लगता है तुमको? भावना? More than 1.4. मोर देन? 1.4. देखो, अगर ऐसे खुलता रहता है ना, तो कम होता रहता है रिजल्टेंट. देखो 180 पे कितना रिजल्टेंट है, बताओ? Yeah, it'll be lesser. लेसर ना. 180 पे 0 है ना. Yeah, yeah. 90 पे 1.4 है. 120 पे 1 है. Yeah. 180 डिग्री पे 0 है. तो 100 पे कितना होगा? 1.3. Yes, 1.3. More, less than 1.4, but more than 1. Because 120 पे 1 है. I'll repeat. At 90, at 100 degree, it will be more than 1, sorry, less than 1.4. Right? क्योंकि ये 90 डिग्री पे है. ठीक है? But it will be greater than what? 1, because it 1 कितने पे? 120 डिग्री. Understood? किसी के दिमाग में खिचड़ी पकी क्या? Oh, my mission is unsuccessful. Okay.
Uh, and of course, when ff is opposite, it is zero, right? Okay. Okay. Now try to do this 32. 32 में 4 point charges are placed at the corner of the force and the charge are to the center of the square. Please try to do it. Okay, it's a big big तो नहीं है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो you can make it small. Okay, +3 -4. If you visualize it, these problems are very easy. If you don't visualize it and start doing it, oh, 10 minutes and still you're not getting the answer. So isn't similar to the equilateral question? I can't. I don't know. You think yourself. I don't know. क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है कि यू आर कीपिंग अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, राइट? You are keeping a positive charge, some positive charge on the center of the square. What is the force on this square, on this? Okay, please visualize, make, don't start writing equations right away. Sir, is it 0? Who said 0? Ananya. Why did you say 0? So I didn't really calculate anything. So the charge on the middle one is 1. So the forces will be from all four sides, and then the opposite sides have opposite, like the same charges, so they'll cancel each other out. And Not gonna comment. But I sir, think उसका resultant जो होगा, like, so मैं if you मैं तो take, बोला गलत है, सही है, मैं बोला not going to comment. okay, सीन पे छोड़ा है मैंने. If there is a +1 coulomb here, microcoulomb here, 1, 2, 3, 4. The force due to the first charge, 3 coulomb, will be in this direction, and I'll call it F1. And the magnitude of F1 is K 3 into 1 by
this whatever this distance is by d square. Okay, distance from the vertex to the origin. Fine. The force due to the third charge, the force due to the third charge is like this, right? And luckily this is also f1, same magnitude. So these two f1s will cancel each other, right? The force on the first 1 microcoulomb charge due to this minus 4 is attractive in nature. It is like this due to this force. Okay, and this f2 is k 4 1 by again the same d square, and because of the second charge, which is this charge, the force is like this. So f2, please note that the green vector is not equal to length to the blue vector. The green vector is in fact longer, right? Longer and a green vector, but both the green vectors are cancelling each other, both the blue vectors are cancelling each other. Fine. So the answer is 0. Okay. Sir, does the charge of the body in the middle matter? The particle in the Very middle? good. Please write the charge of the body in the middle does not matter. It's like opinions of some people. Please write it. The charge on the middle body is, it does not matter. Okay. But now I'm going to make life difficult for you. So Hmm. can you change the value to different and show then फिर कैसे I करें? just don't need to change the value. I just need to change the sign. Okay. Now what is the force and in which direction? Now the answer is will not be 0. Okay. I will change value also. Don't worry. You can tell me in if you want to tell me answers, you can tell me answers. The reference system is east, north, west, and south. Okay, the reference system is east, west, north, south, and I think Anushri will speak up. In which direction is the force now? I don't know. I'm not sure. Is it like Beta, do the green forces still cancel each other? yeah, the green forces? Yes, still. The see, this was +3 and this was +1, right? Yeah, so the does it go towards southwest only or Southwest देख, एक फोर्स सॉरी, एक F1 ये वाली है ऑरेंज वाली, yeah, एक F1 ये वाली है ब्लू वाली, ठीक है? yeah, कौन सी which F1 is not changing? +3 blue. +3 वाला ब्लू नहीं है, बीच वाला चार्ज +1 है ना, Yeah, yeah. तो the yellow one is due to the +3. Oh, okay. Okay, yeah. Force is repulsive. Mm-hmm. Hmm. Yeah. So the yellow one is due to the +3. It is not going to change. Has everyone understood that? So I didn't understand. देखो बीच में चार्ज कितना है? +1. +1. ये वाला चार्ज कितना है? +3. Yeah. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? Repel. तो अगर if I ask what is the force on +1 due to this +3, it will be away from +1. Yeah. Yellow direction. नहीं. Oh, it'll be towards. Away from the +3 on +1. Yeah. The yellow vector. Yeah.
right? Yeah. Initially, this was +3, no? Yeah. This charge. So therefore, the force on +1, the center, due to this +3 was the blue vector. Yeah. Yes? Yeah. But now this is not +3. It is -3. Oh, okay. Force will be attractive. Yeah, got it. Right? If the force is attractive, तो force ये कैसा हो जाएगा, ये blue कैसा हो जाएगा, चेंज हो It'll जाएगा be ना, with yellow. Yeah. विद येलो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे येलो की तरफ ही आ जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं एवरीवन? Yeah. So, but इसका value calculate करते समय we करने won't use the sign, right? साइन तो देखो हमने सोच लिया ना डायरेक्शन, हमने Yeah. दिमाग लगा के डायरेक्शन सोचा ना, Yeah. अब साइन नहीं डालना. Okay. ओके I don't get why the blue goes towards the like northeast. अच्छा देखो, अगर ये +1 चार्ज है और ये -3 चार्ज है, in the force in which direction is the force on +1? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बताना. No, it's towards the minus. ऐसा है ना, Yeah, towards -3. ये बीच का चार्ज +1 है, यू नो दिस. ये -3 है, यू नो दिस. Oh, okay, no, I got it. Because it's repulsive because both are positive, हाँ. so it goes no. Okay, yeah, thank you. दूसरा थोड़ा सा ज्योमेट्री भी यूज होती है बेटा. अगर ये स्क्वायर का साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है, √2a. डायगोनल √2 होता है, तो डायगोनल का हाफ कितना होता है, डायगोनल का हाफ होता है √2a/2. ठीक है, ओके. ये सब यूज होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है ना, अभी ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी वॉट एवर इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, राइट, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो √2a/2 को हम a/√2 भी बोल सकते हैं. ठीक है, a/√2. अंडरस्टूड? So the force is this F1, the value of this F1, blue F1 or white F1, it is K into 3 into 10 power minus 6 into 1 into 10 power minus 6, right? दोनों माइक्रो कूलम है, right? Divided by, my bad, 10 centimeter. A is 10 centimeter, so A is actually 0.1 meter. Okay, so you have 0.1 by √2 का स्क्वायर. अब तुम्हें बताओ तुमको ये समझ में आया कि नहीं पूरा एक्सप्रेशन? देख लो, इसमें कोई भी पार्ट तुमको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो. ये है मेरा Q1, ये है Q2 और ये है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विच इज R, 0.1 by √2. Yeah, No, I everyone? didn't understand how you got the distance between. Distance, the side length of a square is A, the side length of the diagonal is √2a, right? Then the side length of the whole diagonal is √2a, but we want the distance from the center to one of the vertex, that is half of the diagonal. Half of the diagonal is √2a/2, which can also be written as a/√2, because नीचे वाले denominator you can write √2 into √2, so it is a/√2. Understood why this distance here, this distance is a/√2, distance between the charges. Okay, fine everyone, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा k का वैल्यू होता है 9 into 10 power 9, 9 into 10 power 9 into 3 into 10 power minus 12 डिवाइडेड बाई 0.1 की वैल्यू स्क्वायर, तो 10 power minus 2, और ये √2 का स्क्वायर है ना, तो 2 हो जाएगा और ऊपर आके उठ के 2 बन जाएगा. ठीक है, इजी पीजी. ओके, तो 10 power minus 2, 10 power minus 10 और 9 और 10 की पावर -10, 10 power -1, 10 power -1, और ये 9 3 is 18, 18 2 is 36, 36 into 10 power -1, which is 3.6 Newton. Oh, nice answer. Okay, so one of the force is 3.6 Newton. तो नेट फोर्स कितना है इसमें? 2F है. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Is this 2F? Because right, both forces are same and they're in the same direction. So net force on this charge is 2F like this, right? 2F like this, and the value is therefore 7.2 Newton. If you want to write the answer, you can write it 7.2 Newton in northeast. North. So that's 9 into 3 into 2, right?
9 3s are 27. 20. Oh, my bad. Quick math. Very bad. 9 3 से 27 27 54 54 5.4 आएगा 5.4 आएगा तो ये 10.8 हो जाएगा. ओके. Fine, everyone. I'm going to give you some questions from myself. Okay. स्क्वायर है, स्क्वायर बनाना है. सेम क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर. ठीक है. बट द चार्जेस आर 10 मार्च प्लस 10 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 20 कूलम प्लस 22 कूलम. ठीक है. ओके. प्लस क्यों, एक माइनस कर देता हूँ ना, इसको माइनस कर देता हूँ. ठीक है. 10 मार्च 22. ठीक है. और द सेंटर फोर्स सेंटर इज सेंटर में जो है वो +1 माइक्रोकूलम है. सेम. ठीक है. और ये सारे माइक्रोकूलम में, ये सारे माइक्रोकूलम में. ठीक है. स्क्वायर है वही, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. अभी ये नहीं करना है, घर पे करना. ठीक है. अच्छे से. और टाइम लगेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगेगा. ये लिख लिया एवरीवन हैज रिटन. ठीक है. और सेकंड क्या करेंगे, स्क्वायर है. स्क्वायर है तो एक ट्राइंगल है. सेकंड इज अ ट्राइंगल. इट्स इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके. 1 minute, 10 centimeter square क्या है? What? The length is 10 centimeter, no? Yeah, the square length, side length is 10 centimeter. Okay. It's a square. Equilateral triangle है. The side length is again 10 centimeter. And this is +1 coulomb, microcoulomb. This is +2 microcoulomb, and this is +3 microcoulomb. Okay. And you have to find, let's say you have to find at the center of this center. अब कौन सा center? The which center? Centroid. But no. Okay. I'll tell you which center. So the point which is equidistant from all three sides. Okay. In equilateral triangle, it is also, I don't know, centroid or something. Okay. Whatever, the point which is symmetrically in the center of the circle. Okay. Center of the triangle. Sorry. ठीक है. Everyone. So what do you want in that? क्या चाहिए? Oh, वही. I want. This is very good. -1 microcoulomb है. Okay, force on -1 microcoulomb. Center charge. Okay. इसमें समझ में आया, इसमें फोर्स चाहिए, पता है ना, फोर्स on +1. फोर्स, इसमें भी फोर्स चाहिए. नेट फोर्स इसमें भी नेट फोर्स. F net on -1 माइक्रोकूलम्ब में. ठीक है. ओके. The working, how you do the working is important. Okay. Okay. Now these are, you have to answer them now. Okay. 3. Let's see if you have understood or not. +4 +4 +4 +4. Center में +1. Satulika, what is the force on the center one? 1 so It's symmetrical है, सब symmetrical है, सब स्क्वायर के सेंटर पे है. +1. What is the force on +1?
मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. तो लिखा हेलो. Yes, sir. Is it 0? Yeah, it is 0. Sir, in these kind of questions, center chart का value does not matter ना. Does not matter. Does not matter. अगर सब +4 है तो फिर भी एक भी नहीं. चेंज कर दिया, एक भी अगर -4 कर दिया, इस +4 को -4 कर दिया, सॉरी, अगर इस +4 को मैंने -4 कर दिया, अब इट विल मैटर Yeah. Okay. बिकॉज नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स, राइट. Yeah. तो अगर ये +4 है तो ना तो ये +1 कितना है और क्या प्लस है कि माइनस, वो भी मैटर नहीं करता, राइट. और अगर ये माइनस है और ये भी मैटर नहीं करता कि साइड लेंथ क्या है, मैंने स्क्वायर का साइड लेंथ नहीं बताया ना. जब तक चीजें सिमेट्रिक है तब तक तो गुड, ओके. बट चीजें सिमेट्रिक नहीं है तो राइट, तो प्रॉब्लम है. तो -4 अगर ये है, यस यस. Sir, आपने बोला if we make it -4, then the center का matter करेगा. But then in that case also it shouldn't matter because everything else is +4. So we can just see the direction and we can see कि किधर जाएगा, right? किधर जाएगा वो तो समझ में आएगा, कितना होगा वो तो नहीं समझ में आएगा ना बिना. But Okay. sir, it will be 0 only ना. बीच में का भी -4 है. नहीं, जीरो अभी जीरो थोड़ी ना है, Okay, nothing. Yeah. Okay. अभी जीरो नहीं है. अभी किस तरफ है बताओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में. वही है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, किस तरफ है बताओ सोच के. Southeast. Southeast. साउथ ईस्ट, बड़ा जल्दी आंसर आया. हाँ सही है, साउथ ईस्ट है, सही है ना, साउथ ईस्ट है. सबको समझ में आ गया साउथ ईस्ट है. I didn't understand. साउथ ईस्ट क्यों है देखो. चलो ये बताओ कि बस इतना बताना, ये वाला जो +4 है, ये इस +1 को किस तरफ, विच डायरेक्शन इट इज पुट, किस तरफ फोर्स है इसका. हाँ तो इसमें बताओ, इस सिस्टम में. Southwest. हाँ तो तुमको आता है, फिर समझ में आ गया है इसको. और डू दिस विद एवरीवन, यू विल अंडरस्टैंड. ये वाला +4, Southeast. यस. ये वाला +4, Northeast. यस. और ये वाला -4, No. Southeast. यस साउथ ईस्ट, राइट. अब देखो तुम, ये वाले दो, these two will cancel, these two will add up, you will have a resultant like this. That's why they said it is southeast. Okay. Okay, you Bhavna, tell me, if I make this also -4, if I make this also -4, in which direction is the force now? So will it be जी. southwest? Southwest. Think more. तो लिखा, तुम्हारे स्पेलिंग में सिर्फ एक एल है क्या? Yes, sir. ओके.
देखो वही जो मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछे थे ना, दोबारा वही पूछने वाला हूँ, ठीक है? Or will it be northeast? नॉर्थ ईस्ट, अच्छा चलो इसकी वजह से बताओ पहले। Because it's negative and this is positive. तो नॉर्थ ईस्ट, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट ना, Yeah. इसकी वजह से Is that plus or minus? प्लस है, प्लस, सिर्फ ये दोनों प्लस हैं I'll अभी। go south, no, southeast. हाँ, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसकी वजह से North, southeast. साउथ ईस्ट। अब देखो चार फोर्सेस हैं, चारों बराबर हैं, है ना? Yeah. ये एफ है और ये एफ है, ये दोनों एफ मिला के तुमको समझ में आ रहा है, ये ऐसे 2F हो जाएगी। 45 डिग्री पे होगा ना ये, और ये दोनों एफ मिला के भी 2F हो जाएगी, पर ऐसे होगी। Yeah. तो नेट कैसे है, किस तरफ आएगी नेट? ये दोनों बराबर हैं, सिमेट्रिकल हैं, ऐसे है ऐसे है, तो नेट किस तरफ आएगी? सोचो तुम्हारे दो दोस्त हैं, ऐसे तुमको खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे, तुम किस तरफ खींचोगे? तुम हो, ये तुम हो, यू, दिस इज यू, दोनों बराबर से खींच रहे हैं, दोनों का सेम एंगल है, सिमेट्रिकली खींच रहे हैं, यू विल, इन विच डायरेक्शन विल यू बी पुल्ड? No direction. ये ऐसे क्यों? यू विल गो लाइक दिस, नो? Okay, yeah. You will be pulled in no direction if they were pulling you like this. Yeah. So you will be pulled in this direction, okay? If you don't understand ki why the pulling mechanism, simply ऐसे सोचो, this is 2F with an angle of 45 degree. So इसके the components are, this is 2F cos 45, this is 2F sin 45, नीचे वाला 2F again same 45, so it has two components, 2F cos 45, 2F sin 45. These two will cancel, they are same, opposite in direction. These two will add up, 2F cos 45 plus 2F cos 45, okay, 4F cos 45. So it will be pulled in which direction? East direction, okay? Please write this question कि ये दोनों प्लस 4 थे, ये दोनों माइनस 4 थे, the charge is pulled in, the force on the charge is in east direction, exact east, okay? Write this. समझ में आ गया सबको? अच्छा, अभी पहले क्या था कि मैंने ये सारे प्लस 4 थे, फिर मैंने क्या किया, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसको भी माइनस कर दूंगा। अब बताओ किस तरफ फोर्स आएगा, किस तरफ आएगा, उतना बताना बस। बीच वाला प्लस है। तो लोग लिखने लिखने बैठ जाते हैं, पता नहीं, ऐसे देख सोचो ना, इसमें देखो, बस देखने से आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट है ना? Yes, sir, northeast. देखो, और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक ये वाला इसकी वजह से ऐसा, और इसकी वजह से भी ऐसा, राइट? नॉर्थ ईस्ट है ना? ठीक है, अच्छा एक और करता हूँ, मेरे को खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको भी नेगेटिव कर दिया, अब क्या होगा? 0. Sir, 0. हाँ, सिमेट्रिकल 0, समझ में आया? 0, ठीक है। अब एक ट्रिक सुनो, क्या होता है? ट्रिक ये होती है, ये तो सारे 4 थे ना, ये सारे 4 थे, सपोज ये सारे 4 थे, ठीक है? +4 +4 +4 +4, क्यू 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 क्यू, ठीक। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि इस +4 को मैंने +5 कर दिया, जब +4 था तो 0 था, राइट? जब ये +5 होगा तो क्या आंसर होगा? तो एक बात तो तुमने कॉमन सेंस से पता चल जाएगी कि जो आंसर होगा वो ऐसा आएगा। ये समझ में आ रहा है?
ये थोड़ा सोच लो, ये समझ में आना चाहिए। लेकिन वो कितना आएगा उसके लिए इट विल बी इक्वल टू द आंसर ऑफ 0 0 0 और यहाँ पे 1। थिंक अबाउट दिस इज इंपॉर्टेंट। You can think of this +5 as not +5 but a combination of +4 and +1, okay, and due to this +4 ये पूरा system is 0, right? So this is like okay, only one +1 coulomb यहाँ पर है। अब तुम यहाँ पे you can find it out. Understood? ये समझ में आ गया कि this system is exactly equal to like this system? पक्का? Everyone has understood? You can use this in sorry, you can't use it. You can use it here in second question. ये +1 +2 +3 है ना? You can सबको लैडर से +1 काट दो, सबका +1 सबका काट दो। समझ में आया? नहीं आया समझ में? सबसे हटा दो +1, तो ये कितना, ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला, सॉरी, ये वाला 0 और ये वाला 1 और ये वाला 2 2। तो you this question will reduce to only two charges, एक ये वाला +1 और एक ये वाला +2, राइट? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो you don't have to find 3 forces now, you'll only have to find 2. Okay, सर हम ऐसा लाइक सब्ट्रैक्ट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज़ इट्स स्केलर, yes, लाइक चार्ज। because the charges are scalar, मतलब सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, हम +5 को एज अ +4 और +1 कंसिडर कर रहे हैं। दिस वी कैन डू बिकॉज चार्जेस आर स्केलर। ओके सर, हाँ, सर इस वाले में हम +5 पे कैसे निकालेंगे? लाइक डू वी कंसिडर द बीच वाला प्लस आल्सो? अच्छा तुमको चाहिए कि सर मुझे कॉर्नर बीच वाले पे फोर्स नहीं निकालना है, मुझे कॉर्नर वाले पे फोर्स निकालना है ना? कॉर्नर वाले पे फोर्स निकालना है तो तुमको कितने चार्जेस हैं जो कॉर्नर वाले के अलावा हैं? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। All these 4 charges will apply force on this. Okay, so we can combine the beach wala and the +4 on the opposite corner, right? तुम क्या बोल रही हो, इसको और इसको? Yeah. नहीं, पर इनके डिस्टेंसेस तो अलग अलग है ना? Yeah. From the +5 इनके डिस्टेंसेस अलग अलग है ना, तो you can't. Okay. ठीक है। your third homework question में तुमको 2 दिए थे ना, मैंने 2 दिए थे ना, 1 और 2। your third question is this कि अगर ये +4 है, ये +4 है, ये +4 है, नीचे बीच में +1 है माइक्रोकूलम, ये सारे माइक्रोकूलम है, तो +5 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स है? दिस इज द फोर्स ऑन F on +5 microcoulomb. In this case, how much you have to find out. ठीक है? आ गया, Pardon? आ गया आई थिंक। नहीं है इतना जल्दी, 0 नहीं है और डायरेक्शन भी it's नहीं not पूछ रहा, मैं एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा हूँ। ओह अच्छा, ओके। डायरेक्शन पूछ रहा हो तो साउथ ईस्ट है ना? नहीं, हाँ, बट इट्स गोइंग टू बी द सेम मैग्नीट्यूड एज जो सेंटर वाले पे लग रहा है। SMART, yeah, it is going to be the same as the +5। अच्छा हाँ यार, यस, जो इस केस में आया था ना। वन सेकेंड सोचने दो यार, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। नो, फोर्स 1 मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो 1 थोड़ी 0 हो सकता है। 1 मिनट, वो बोल रहा है कि 1 मिनट मुझे सोचने दो। वो बोल रहा है कि जो +5 पे जो फोर्स है वो सेम है जो +1 पे, ऐसा बोल रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ जो बॉटम राइट पे जो फोर्स है उसका +5 पे, हाँ, इज द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ जो सेंटर वाले पे लग रहा है। जो नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे? बाकी सब होना तो चाहिए। zero। 1 मिनट, पहले बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? नेवर माइंड, आ गया। ऐसा नहीं है, मेरे को भी एक मोमेंट के लिए लगा था कि सही बोल रहे हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। Force on +1 is due to all the charges which are present in the environment except +1. And you see that it is very close to 0 just because of this +5. This +5 was a scumbag, इसकी वजह से वो 0 नहीं है, right? But the force on +5 is due to all the charges which are except for +5. So these 4, right? These 4, no? और ये 0 नहीं है, बहुत ज्यादा है।
हाँ ओके तो बहुत ज्यादा है ये। अगर +5 पे फोर्स ढूंढना है हम्म राइट, तो कॉर्नर वाले 3 को 0 कर सकते हैं एंड सेंटर वाले नहीं को कर सकते। -3 कर सकते हैं ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको तुम्हारे लिए ए बी सी डी, अब बोलो क्या बोल रहे हो। ओके हाँ, तो ए बी सी को 0 कर दो एंड डी नहीं कर को सकते। -3 कर दो ना डी को। नहीं ऐसा नहीं है, देखो तुम ए सेम पॉइंट पे चार्ज को तोड़ सकते हो, अलग अलग पॉइंट पे चार्ज को वैसे नहीं कर सकते ना, समझ में आया? नहीं, ओ तुम हाँ प्लस ओके वन, राइट। तुम इस +1 को ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक +1 नहीं, यहाँ पे +3 और -2 है, दो अलग अलग है। हाँ गॉट इट। बट ऐसा नहीं कर सकते तुम ये 4 4 4 उठा के तुम इसको मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग वो नहीं कर सकते। ओके, यू आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द चार्जेस, राइट? ओके गॉट इट हाँ। ओके, और तो फिर ये जो 0 0 1 वाला सिस्टम है, दैट्स ओनली एप्लीकेबल जब सेंटर वाले पे फोर्स ढूंढता है। हाँ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द फोर्स ऑन द सेंटर वन। ठीक है, ओके। ठीक है, tomorrow नहीं, whenever we have next class we will keep it, we'll do electric field, and after electric field you will should be able to do most questions of this chapter. Okay, yeah, uh, and please check out the assignment tracker, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या होमवर्क है आज का, ठीक है? Okay, everyone, and yeah, that's it. So, Do you? Yes, बोलो बोलो। so can I send you a question? मेरा आज waves पे एक test हुआ था. I don't know how ठीक to है, do it. I'll stop recording. Okay.